So we are heroes tonight. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आमिर है। जैसे कि आज आपको मैं बताने वाला हूँ स्टोन मेसनरी फाउंडेशन के बारे में। लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा बेसमेंट रेडी हो रहा है। जो मेन पर्पस रहता है बेसमेंट डालने का वो है जो घुसा रहते वो अंदर घुस के अपना फाउंडेशन ख़राब नहीं करना। बेसमेंट डालने के वास्ते जो एक्सकैवेशन करते हैं अपन, वो 1 फीट से लेके 3 फीट डाउन करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इधर जो बाउंड्री है आपकी, वो आप कोशिश कीजिए कि ग्रेनाइटों से कवर कीजिए। जो इनर साइड है वो अपन ईंटों से किसी और चीज़ से कर ले सकते हैं। आउटर मेन रहता, आउटर को अच्छा प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि घूस अगर आई तो बाहर का हिस्सा पहले आती, बाहर से पहले आती नहीं, बाद में अंदर के हिस्से में आती। अगर आपका बाहर का हिस्सा वीक है तो अंदर कैसा भी घुसती, फिर आपका पूरा फाउंडेशन ख़राब करती इन्हें। Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. जो अपने घर की जो मेन फेसिंग रहती है उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन करना रहता अपने को, क्योंकि घूस या कोई भी चीज़ आई तो वहाँ से आने के चांस रहते हैं। क्योंकि अपने आसपास पूरा एरिया डेवलप्ड है तो आने के चांस रहते हैं उसके वहाँ से एंट्रेंस पे से। तो कोशिश कीजिए कि वो हिस्सा ज़्यादा आप प्रोटेक्टेड करें, आप ज़्यादा सेव करने की कोशिश कीजिए। In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you.
जैसे कि आप देख सकते हैं इधर जो अपना इनर बेसमेंट रेडी हो रहा है वो ईंटों से हो रहा है। अगर आप चाहे तो इसको भी आप ग्रेनाइटों से ही कर सकते हैं। हमला इसलिए कर रहे कि हमारे चारों तरफ से बिल्डिंग्स बन चुके हैं, घूस आने का कोई ख़तरा नहीं है। चारों तरफ से आना तो आना, एंट्रेंस पे से आना, तो उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्टेड कर दिया हमला, तो टेंशन नहीं रहती। तो इसको आप कैसा भी कर सकते हैं, या ईंटों से नहीं करना है, खाली कंक्रीट का एक बेस बना दिया तो भी चलता।
काट भी दिए भी। हाँ। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा बेसमेंट रेडी हो चुका है, यहाँ पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।